Hi guys, welcome back to the channel. I'm your host Dr. 𝐶𝐚𝐭𝐬𝐻, a SEBI registered research analyst. So before I go on anywhere, you are on my Telegram channel. Just click on to the description box of today's video or yesterday's video or a video about 2-3 days back video. Go to the description box and you will find the link of the Telegram channel. Click on this and you will straight away come to my Telegram channel. You will also find the link for daily live trading. So this link will allow you to trade along with stock pro mentors from 10 to 11. And people make a lot of money every single day. So this is our invitation. This is our way to give back to society, give back to the people who are new to the market and give them our refined research. So what I'm going to do, I'm your host Dr. 𝐶𝐚𝐭𝐬𝐻. I'm presenting a list of stocks फॉर अपकमिंग डेज। आने वाले दिनों में क्या लगता है उससे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी ने एक बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट दिया था वेडनेसडे को, एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी। उसके बाद नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग और फ्राइडे को भी एक गैप अप ओपनिंग भी है, बट एक ओपन इक्वल टू हाई बना है इस कैंडल में, इस निफ्टी में। दैट ये हाई अगर ब्रेक होगा तो निफ्टी अपने आगे के मूवमेंट की तरफ चल पड़ेगी। अगर हम इसका ऑप्शन चेन देखते हैं तो निफ्टी को थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, कुछ 16,200 पे निफ्टी को एक रेजिस्टेंस लग रहा है। और क्योंकि 16,200 पे एक रेजिस्टेंस लग रहा है, लेट मी टेक यू टू द ऑप्शन चेन। ये करंट एक्सपायरी है ऑप्शन चेन की, तो थोड़ा सा इन द मनी कॉल ऑप्शन राइट हो रहा है और पुट राइटिंग भी जबरदस्त है एट द सेम लेवल ऑफ 16,200। सो एक ब्रॉड रेंज जो निकल के आती है निफ्टी की, वो 16,200 से लेके 16,400 तक की रेंज निकल के आती है निफ्टी की। और बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ऑल्सो लुक्स लिटिल रेंज बाउंड, बट ये मैं बात कर रही हूँ जब मार्केट क्लोज्ड है। जब मार्केट ओपन होगा तो डायनामिक्स विल कंप्लीटली चेंज। तो निफ्टी, अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा एक सपोर्ट बन रहा है एट द लेवल ऑफ 35,000। थोड़ी सी इन द मनी पुट आउट राइटिंग भी है, थोड़ी सी इन द मनी कॉल राइटिंग भी है। तो एक नैरो रेंज डिफाइन करके बैंक निफ्टी भी चलेगी, 35,000 से 35,500 तक की रेंज रहेगी इस एक्सपायरी तक। अब हम लोग कर लेते हैं बात स्टॉक्स की, जो मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके रखे हैं। और एज ऑलवेज माय टाइम फ्रेम इज 1 डे। तो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है धामपुर। ये एक ऐसा स्टॉक है जो बॉटम्ड आउट हो चुका है और काफी इंडिसाइसिव होने के बाद एक ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी है। तो अगर ये 230 के ऊपर जाता है तो हमको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती हुई इसमें दिखाई देती है। स्टॉप लॉस कुछ हमारा रहेगा 215 का एंड टारगेट हमारा रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 250 का। जैसे ही आपका स्टॉक जो है प्रॉफिट जोन में जाता है, आपको प्राइस को शिफ्ट करके, दो स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके कॉस्ट के ऊपर लेके आना है। तो आपका हमेशा आइडिया ये होना चाहिए, चाहे आप इंट्राडे करें चाहे पोजीशन ट्रेड करें, कि जैसे ही आपका स्टॉक एक प्रॉफिट जोन में जाता है, आप अपनी स्टॉप लॉस को शिफ्ट करिए, प्रॉफिट जोन में रखिए ताकि आपको ब्रोकरेज निकले और थोड़ा सा प्रॉफिट निकले। तो ये आपको जरूर करना है, इसको ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एनटीपीसी। एनटीपीसी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनाया है अपना 135 136 पे, और अब ये एक ऐसी जगह पे खड़ी है जहां पे एनटीपीसी में और पावर के जितने भी स्टॉक्स हैं सब में एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो 145 के ऊपर 144.5 के ऊपर एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो पहला टारगेट हमारा इसमें रहेगा 148 का, स्टॉप लॉस रहेगा 141 का। तो करीब 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 4 ही पॉइंट का टारगेट है। और अगर ये 4 पॉइंट निकल जाते हैं, 148 के ऊपर चला जाता है, 150 पे आपको कॉल एंड बाइंडिंग दिखाई देती है, तब आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 154 का। नेक्स्ट स्टॉक जो एक बहुत अच्छे स्टैंड पे खड़ा हुआ है वो है एलटीटीएस। एलटीटीएस में हम एंट्री लेंगे 2130 के ऊपर। पहला टारगेट हमारा रहेगा 3130 के ऊपर लेंगे हम एंट्री। पहला टारगेट हमारा रहेगा 3180 के ऊपर। अगर 3180 क्रॉस हो जाता है तब हमको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 3250 का। एलटीटीएस बहुत अच्छा लग रहा है, कई सारे आईटी स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल इन्फी बहुत अच्छा लग रहा है, सब में सेम सिंपल, सब में सेम स्टाइल का ब्रेकआउट आया है।
फर्स्ट कैंडल सबकी नेगेटिव है, उसके बाद स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया है और ऊपर जाने की कोशिश की है, चाहे वो LTTS हो, चाहे वो इन्फी हो और चाहे वो टेकन हो। सिमिलर पैटर्न है सबका, 15 मिनट के अंदर फर्स्ट नेगेटिव कैंडल और उसके बाद एक अपवर्ड मूवमेंट मिल रहा है। तो हम बात करते हैं LTTS का। LTTS की प्लानिंग ये रहेगी कि हम बाय करेंगे इसको, अगर ये 3130 पे हमको मिलता है तो एक टारगेट हमको मिलेगा 3180 का, और अगर 3180 को क्रॉस करता है तो 324050 का टारगेट मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे रडार पे ओबरॉय रियलिटी। ओबरॉय रियलिटी ने बहुत अच्छा एक, आप देखेंगे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे एक डबल बॉटम अपना बना के उसको ब्रेकआउट दिया है। ये एक डबल बॉटम बना था, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, बट अभी अगर हम बड़े लेवल पे देखते हैं तो यहाँ पे भी एक ऐसा बन रहा है कि, ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ डबल बॉटम फॉर्मिंग एट दिस लेवल इफ यू नोटिस। सो यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट आता हुआ मिल सकता है 810 के ऊपर with a stop loss of about 780. Target रहेगा 828 first target, next target is going to be 860. Infi is also looking very good. Infi, the kind of price rejection it has taken looks very promising. There are these two candles at the back, right? These candles looking, they are sell candles, so 1520 has to be crossed, 1521 has to be crossed. After that only we will get an entry, and our stop loss is going to be 1500. Our target is going to be 1540, and after 1540, 1560, like that we will be getting our target, and the next target could be 1570. A very, very beautiful stock is Titan. Titan is looking good, and Titan, if you notice, is given a very massive gap up, and 2 days it's consolidated. And now when I'm looking at its data, it's looking very promising. Our breakout is going to be above 2154. First target is going to be 2170. Agar 2170 cross hota hai, we get a target of 2200, 2250, 2300. Then the next stock that I have on my radar is Deepak Nitrite. Look at the price rejection, look at the indecisiveness in the market. A little gap up opening, then again a little gap up opening, and open equal to high candle. If this open equal to high candle is taken out, we can expect a good move up. First target, stop loss is going to be 1750. First target is going to be 1800, then 1820, then 1840, and 1860. These are going to be targets in the Deepak Nitrite on a short-term basis. Then Bank of Baroda is looking extremely good. Have a look at the double bottom that it has formed. Crossing this barrier will give a good breakout. 106.5 is our entry. Stop loss रहेगा कुछ 104 का, और टारगेट रहेगा 110 का, नेक्स्ट टारगेट 115 का. इसी तरह टेक महिंद्रा is also looking very, very promising. Have a look at the price. It's shifting in the upward direction slowly, gradually. There is an open equal to high candle. Once it is taken out, we can expect a good move in this stock. So the entry is going to be above 1040, stop loss is going to be 1020, and target is going to be 1060, 1080, and 1100. Be careful. Once your price goes above the cost price, shift your stop loss in the profit zone. Another very promising and nice stock that I can see is Balakrishna Industries. It's a tire stock. There's a beautiful entry in the stock at about 2300. 23 is a strong resistance zone, as the option writers are going to be active. Above 2300, we can expect a good entry. Our stop loss is going to be 2260. Our target is going to be 2340, 2360, and 2400 in the end will be our final target. And crossing 2400 can lead to another breakout in the stock, which can take the price to 2500. The next stock that I have on my radar is National Aluminium. Have a look at the National Aluminium. Look at the price. It has given a double bottom breakout. Somewhere here the breakout had come. Price is taking the support from the same level. Our buy is above 75.75. Our stop loss is 72. Our target is going to be at least 84.
So National Aluminium is looking good. In case banking and the metal stock remain positive, market will go up. In case they both go under stress, probably market may come down. So be careful with your entries. Don't be in a rush. In case of a gap up opening, leave the stock. The last stock that I'm giving you is IEX. Look at the price rejection from the lower levels. We have an entry above 165.5. Our stop loss is going to be at 160.5. Our target is going to be 170, 174, 177 are going to be our targets. So the list is entire here: Dhampur, NTPC, LTTS, Oberoi, Infi, Titan, Deepak Nitrite, Bank of Baroda, TechM, Balakrishna, and National Aluminium, and IEX. If you like the video, if you like the content that I'm making for you, please give a thumbs up and share my video with others. Again, I'm quoting, come to the description box, you'll get the link of my Telegram channel, and you will get the link of the GoToWebinar where we do the live trading every single day. See you in the live webinar tomorrow. Take care. Bye-bye. All the best. Your host, Dr. Seema Jain, signing off. See you tomorrow in the live market.